Hey guys, so we're starting with this PYQs CBSE Class 12 Solutions. अब इस पे मैंने क्या किया है कि मैं आपके लिए ये ले रही हूँ, जैसे PYQs ले रही हूँ CBSE Class 12 के, जो कि 2024 में से। अब होता क्या है कि देर आर अ लॉट मैनी सेट्स विच मे बी प्रेजेंट, और ये जो लॉट मैनी सेट्स हैं उसमें से ये क्वेश्चंस मैंने 2024 में जितने भी सेट्स में आए हैं वो सारे के सारे मैंने इधर लिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस लाइक दिस ओनली। जैसे 2024 के हम लोगों ने सारे सेट्स से लिए, वैसे आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम 2023 और 2022। सो 5 ईयर के क्वेश्चंस आते रहेंगे, बट one at a time. So I have picked up 20 questions from here. We are doing PYQ CBSE Class 12 Solutions. Let's get started. अपनी कॉपीज और पेंसिल्स रख लो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, उसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, और अपने डाउट्स मेरे साथ सॉल्व करो ऑन टेलीग्राम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास assertion रीजन आएंगे, एंड देन यू गोइंग टू गेट 2 marks, 3 marks and 5 marks. So that is how I have taken it in this, and will be taking in all the assignments which are about to come slowly or maybe rapidly. So आपने solutions का मेरा जो वो एक वन शॉट में वीडियो अपलोड हुआ था, होप यू हैव लुक्ड इनटू दैट। सो उसके बाद ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, पहले उस वीडियो को देखो फिर इन क्वेश्चंस को करो, तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस आपको खुद से आ जाएंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट द वैन हॉफ फैक्टर। सो एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एसोसिएट हो रहे हैं, तो वैन हॉफ फैक्टर ओवर हियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस दैन 1. So the correct choice over here is going to be 4, is always less than 1. We are moving on to question number 2. Phenol dimerizes in benzene having Van 't Hoff factor 0.54. What is its degree of association? तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है, थोड़ी सी थिकनेस हम लोग बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो है इसको कैलकुलेट करने का, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, I दैट इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये क्या हो रहा है, दिस इज एसोसिएशन टेकिंग प्लेस, सो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 upon n minus 1. दिस फॉर्मूला इज व्हाट वी कैन यूज ओवर हियर। तो हमारे पास आ जाएगा, I की वैल्यू आपको दे रखी है 0.54, which is equal to 1 plus alpha 1 by 2 minus 1, and on calculating for alpha over here the answer comes to 0.92. So the correct option over here is going to be 3. ठीक है, we can move on to the next question then. We are moving on to question number 3. अच्छा, इसके लिए एक और फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट, जिसमें आप यूज कर सकते हो, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला इज गोइंग टू बी अल्फा दैट इज इक्वल टू I minus 1. इसी वाले फॉर्मूला को हम लोगों ने थोड़ा सा इजी करा है, 1 upon n minus 1. n की वैल्यू हम लोग 2 यहाँ पे ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या बोला है कि इट इज डाइमराइजिंग। Okay, let's move on to question number 3. An azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them when it is, अब minimum boiling point है ये, या minimum boiling azeotropes है। So अगर ये minimum boiling azeotropes है, they are going to show positive deviation. So the correct option over here is going to be 2, right? We are moving on to the next question. The relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution containing non-volatile solute is 0.0225. What is the mole fraction of the non-volatile solute? अब इसके लिए आई एम श्योर कि आपको पता है कि what is going to be the
the formula. The formula over here is going to be P naught minus PS upon P naught, that is equal to XB. अब क्वेश्चन में आपको relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution is given as 0.225, so this is 0.225 which is equal to XB. So XB की वैल्यू क्या आ रही है? very simple, it is coming as 0.0225. Sorry, यहाँ पे 0.0225. Okay, moving on to the next question. So our next question is, an azeotropic solution of two liquids has boiling point higher than either of them. अब यहाँ पे boiling point higher है, तो higher मतलब maximum boiling azeotropes ये बन रहे हैं. तो maximum boiling azeotropes किससे बनते हैं बच्चों? जो कि negative deviation show करता है from the Reynolds law. Moving on to next question. A 1% solution of solute X is isotonic with 6% solution of sucrose. The molar mass of the solute X is going to be what? Now यहाँ पे हम लोगों के पास क्या दे रखा है उन्होंने दिया हुआ है 1% solution of solute X. So 1% solution का मतलब क्या हुआ? 1/100 है ना? Isotonic with 6% solution of sucrose. तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? Pi for isotonic solution, pi 1 is equal to pi 2, right? So pi 1 is C1 RT, that is equal to C2 RT. RT और RT हो गए cancel. C1 is equal to C2. This is the formula which you're going to use. Now C1 is N1 upon V, which is equal to N2 upon V. और अगर वॉल्यूम भी सेम है तो ये आ जाएगा N1 is equal to N2. N1 is equal to what? Weight of 1 upon molar mass of 1, which is equal to weight of 2 upon molar mass of 2. So weight of 1 is 1%, which will be 1/100. 6% solution of glucose, of sucrose. तो यहाँ पे M आ गया, which is equal to W2 6% है, so 6/100 into 342. 100 और 100 हो गए cancel. Can you calculate the value of M over here then? बहुत ही simple है. So M की जो answer आ जाएगी, that is going to be what? 34.57, 3.42 grams. तो ये सारे options हमको दे रखे हैं. तो इधर आपके पास आ जाएगा M1 की वैल्यू, which is equal to 342 upon 6, which becomes equal to 57. So the correct option over here is 57 grams per mole. Alright, ऐसे आप देखोगे कि काफी सारे questions इस तरह के हमको आए हुए हैं 2024 में. Now then after the multiple choice questions we go to assertion reason questions. So उसमें आपको options रहते हैं कि whether A is right or B is right, right? मतलब assertion ठीक है, R ठीक है, R उसकी correct explanation है कि नहीं है. So ये सारे questions इस तरह से आपके रहेंगे और उसमें आपने options को check कर लेना है एक बारी बहुत thoroughly. So आपका first question है, when NaCl is added to water, depression in freezing point is obtained. So this is correct. NaCl undergoes dissociation in water. This is also correct, but it is not the correct explanation. So A is correct, but reason is A and B both are correct. मतलब assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation of A. ठीक है? फिर हर एक उसमें क्वेश्चंस में आप प्लीज इसको रीड करना कि ABCD आपने कब लिखना है, बिकॉज दैट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेपर्स. ओके, CBSE बोर्ड में तो ऑफ कोर्स सेम है, बट अदरवाइज इसमें इट कैन बी डिफरेंट. सो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ गया, व्हेन NaCl is added to water, depression freezing point is obtained. Correct. NaCl undergoes dissociation. Correct. But reason is not the correct explanation of A. Let's go on to question number 8. When NaCl is added in water, elevation and boiling point is observed. Correct. Elevation and boiling point is a colligative property. Again दोनों correct है, but R जो है correct explanation नहीं है A का. Then delta H for ideal solution is not equal to 0. This is false. Delta H mixing for ideal solution is equal to 0.
So ये हो जाएगा false. AB interactions in an ideal solution are same as A and BB interactions. This is correct. So A is wrong, assertion is wrong, reason is correct, right? Then addition of ethylene glycol to water. Sorry, this is water over here. Typing error. Addition of ethylene glycol to water lowers its freezing point. Correct. Ethylene, ये Italian नहीं है बच्चों, ये भी again there's a typing error. Ethylene glycol is insoluble in water due to lack of ability to form hydrogen bonds. Both are correct. Again, your R is not the correct explanation of A. Let's go on to the next one. The boiling point of ethanol is higher than that of dimethyl ether. Correct. Reason दिया हुआ है, molecules are associated through hydrogen bonding. Absolutely correct. And reason is the correct explanation of assertion. ये first हमको of its kind आया है, जहाँ पे reason जो है वो correct explanation है of assertion. Then delta H and delta V are 0 for non-ideal solutions. गलत. Reason, solute-solvent interactions are not same as pure solute-solute and pure solvent-solvent interactions in non-ideal solution. This is correct. Okay. So ये आपके पास assertion reason भी आ गए हैं और हमारे पास multiple choice भी आ गए हैं. Let's move on to the other questions. अब question है आपको जो 2024 के किसी एक set में आया हुआ है, that at the same temperature carbon dioxide gas is more soluble in water than oxygen gas, which will have a higher value of KH and Y. Okay, अब इसमें आपके पास आंसर जो होगा, I am doing the first one, 13th का first one. यहाँ पे जो KH होता है for oxygen, that is going to be higher, as it is less soluble in water. So we already know that the value of KH, that is inversely proportional to solubility. तो क्योंकि ऑक्सीजन की solubility कम है, इसलिए इसकी KH की वैल्यू ज्यादा होगी. Okay, then we are moving on to the second part. Second part क्या बोल रहा है? How does the size of blood cells change when placed in an aqueous solution containing more than 0.9% sodium chloride? अब इसमें जो water होगा, end osmosis होगी. So answer आपने इसका कैसे लिखना है? That the water content enters the blood cells by osmosis. This leads to swelling of RBCs, and they can also burst. They can also burst. ठीक है, burst यहाँ पे add करना. I am just adding one more slide for the next question over here. Okay. So I hope you're understanding. Right. So burst हमारा रह गया था. So it bursts. बहुत मोटा है. अच्छा चलो थोड़ा सा इसको हम thickness इसकी थोड़ी सी कम कर लेते हैं. So we're moving on to question number 3 then. 13 का third part. ये वाला जो question है ये 5 marks का है बच्चों. 1 mole aqueous solution of an electrolyte A2B3 is 60% ionized. Calculate the boiling point of the solution. Okay, so let's see how we have to do this question. Third part we are moving on to.
So we know that the value of the Van 't Hoff factor I, that will be equal to 1 plus alpha n minus 1. ठीक है, सो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस, आपको ये दिया है 0.60, 60% dissociation, n minus 1. So this will be equal to 1 plus 0.60. अब n की क्या वैल्यू है? इट इज गिवन A2B3. So 5 A2B3 is 5 moles. So 5 minus 1, which is equal to 4. This on calculation becomes equal to, the value of I becomes equal to 3.4. We can go on to delta TB. Delta TB is equal to I KBM. So put the value of I over here, which is 3.4 into 0.52. The value of Kb is given to you into 1 molar solution, which becomes equal to 1.768 Kelvin. So ये delta TB आ गया. So TB की value क्या आ जाएगी? TB will be equal to 373 plus 1.768. So the answer over here, that comes equal to 374.768. This is going to be the answer. Okay, we're moving on to the next question then. I hope this is understood. So the value of TB, that is coming as 374.768. We are moving on to the next question. हमारा next question है, the vapor pressure of A and B at 25 degrees centigrade are 75 mm of mercury and 25 mm of mercury respectively. If A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture is 0.4, then calculate the mole fraction of B in the vapor phase. Define colligative property. So अच्छा, पहले part 1 करते हैं 14th का. वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी आपको दे रखा है 25 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 75 mm and 25 mm. सो इससे पहले हम पी ए की वैल्यू निकालते हैं. पी ए दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए. ठीक है, सो दैट विल बी, आपको 0.4 दिया हुआ है ना, 0.4. ओके, सो दिस इज पी ए नॉट इज 75 इंटू 0.4, which becomes equal to 30. Then PB उसी तरह से कैलकुलेट कर लो, which is equal to PB naught into XB. So this will be 25 into 0.6, which becomes equal to 15. P total कैलकुलेट कर लेते हैं. P total will be PA plus PB. PA की वैल्यू आपको कितनी दी है? 30 plus 15, which becomes equal to 45. Right? Now you have to calculate YB. YB is the vapor pressure in the vapor phase, which is given by according to Dalton's law, PV upon P total. So this is PB is 15 upon 45. So 1 upon 3. So 1 upon 3 will be 0.33. atmosphere. This is going to be the vapor pressure. ठीक है, in the vapor state. Right? इसका second part क्या है? Define colligative property. Which colligative property is preferred for the molar mass determination of molecular macromolecules? So colligative property आपको पता है, the property which will only depend upon the mole fraction or number of moles which are present, molecules which are present in the solution, and which colligative is property is preferred for the molar mass determination of macromolecules, that will be osmotic pressure. Why are equimolar solutions of sodium chloride and glucose are not isotonic?
दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन बिकॉज सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है और उसमें हमको आई फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है। ग्लूकोज में हमको आई फैक्टर को कंसिडर नहीं करना पड़ता है बिकॉज ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए दे कैन नॉट बी आइसोटोनिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6% solution of glucose is isotonic with, देखो ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपके पास, 2.5% solution of an unknown organic substance, calculate the molecular weight of the unknown organic substance. So directly I have already told you the formula जो इसमें यूज होना है पिछले क्वेश्चन में, pi1 is equal to pi2. This may be in some other set. तो यहाँ पे C1 for isotonic solution, C1 is equal to C2. C1 को हम लोगों ने फिर क्या करा था, W1 upon M1 that is equal to W2 upon M2. W1 क्या है, 6% solution, 6 upon 100. Glucose is 180 which is equal to W2. W2 हमारे पास क्या है, 2.5%, so 2.5 upon 100 into M2. So when you calculate M2 over here, the value of M2 that is coming as 75. Moving on to the next question, guys. The vapor pressure of a solvent at 283 Kelvin is 100 mm of mercury. Calculate the vapor pressure of a dilute solution containing 1 mole of a strong electrolyte AB in 50 moles of a solvent at 283 Kelvin. Assuming complete dissociation. तो इसमें number of moles भी आपने देखने हैं कि अगर assuming complete dissociation आपको दे रखा है तो इसका मतलब you have to take n as equal to 2. Okay. So let's see how we have to do this question. We have P naught minus PS upon P naught, which is equal to I into XB. P naught 100 है प्योर सॉल्वेंट का, PS आपको फाइंड करना है अपॉन 100 which is equal to I, you can take it as 2 over here, और ये आपके पास 50 मोल्स हैं और दूसरे का आपके पास 1 मोल है ना, कैलकुलेट वेपर प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, सो दिस विल बी XB 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स which is 51. ठीक है, so you can calculate for PS over here. PS की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 96.1. Moving on to the next question. Question number 17. A 4% solution of urea is isotonic with 5.2% solution of an unknown organic substance. Calculate the molecular weight of the unknown organic substance. ये भी वैसे ही करना है आपने. So यहाँ पे आपके पास फिर से क्या आ गया, pi1 is equal to pi2. So W1 upon M1 that is equal to W2 upon M2. ठीक है, W1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4%, so 4 upon 100. यूरिया का 60 आ गया मास which is equal to W2 आपको दिया है 5.2%, so 5.2 upon 100, and you have to calculate the value of M2. On calculating the value of M2, that becomes equal to 78. Moving on to question number 18, guys. Define molar depression constant, how it is related to enthalpy of fusion. अब molar depression constant क्या होता है? Molar depression constant या molar freezing point depression constant, it is defined as, moving on to part A, it is defined as the depression in freezing point for 1 molar solution. Now इसको हम लोग KF के साथ रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली. दिस इज गिवन एज MR
TF square upon डेल्टा H फ्यूजन। तो इस तरह से ये डेल्टा H फ्यूजन के साथ रिलेटेड है इन 2000, where m is the molar mass, r is the gas constant, Tf is going to be depression in freezing point, delta H is the enthalpy of fusion in 2000. Part B, what type of deviation is shown by ethanol and acetone mixture? Give reason what type of azeotropic mixture is formed by that that deviation. So, what type of deviation is shown by ethanol? अब इसके लिए I will have to just add a screen. Just give me a second and let's see how we were supposed to do this question. Okay. Now acetone or ethanol, they show positive deviation from Reol's law. ओके अब होता क्या है कि when acetone is added in ethyl alcohol, the molecules of acetone tend to occupy the spaces between ethyl alcohol molecules. So consequently क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाएंगे ब्रेक. Consequently some of the hydrogen bonds in alcohol molecules break. Now this will lead to more escaping tendency because the attractive forces in alcohol molecules they are weakened. So escaping tendency जो molecules की होगी वो increase हो जाएगी और vapor pressure भी increase हो जाएगा. Then part 3 of the question is कि कौन सी deviation ये show करता है. तो this type of solution will form minimum boiling azeotropes. Okay, we are moving on to the next question then. A solution is prepared by dissolving 5 grams of a non-volatile solute in 200 grams of water. It has vapor pressure of 31.84 mercury mm of mercury at 300 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute है. Okay, vapor pressure of pure water at 300 Kelvin is 32 mm of mercury. Okay, let's go on to the question. फटाफट से करते हैं. हमें पता है P naught minus PS upon P naught that is equal to XB. Put the values. XB का मतलब WP upon MB into MA into WA. So WB की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पहले P naught की वैल्यू लगाते हैं 32 minus 31.84 upon 32 which is equal to 5 into 18 upon MB into 200. So we can calculate MB from here. The value of MB that becomes equal to 90.
ओके 90 ग्राम्स पर मोल. So ये molar mass हो गया. Let's move on to the last question for today. 18 grams of a non-volatile solute is dissolved in 200 grams of water, freezes at 272.07 Kelvin. Calculate the molecular mass of the solute. Kf is equal to Kf मतलब freezing point. ये typing error है इसमें. 1.86 Kelvin kg per mole. Okay. ओके सो क्या आंसर इसका आना चाहिए. सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकालते हैं विच इज टी एफ नॉट माइनस टी एफ. सो ये आ जाएगा आपके पास 273 माइनस 272.07 which becomes equal to 0.93. So delta TF की वैल्यू आ गई. Let's put the formula. Delta TF is equal to KF into WB into 1000 upon MB into WA. So this will be 1.86 into 18 into 1000 upon MB into 200. और डेल्टा TF की वैल्यू आपके पास 0.93 है. So you can calculate MB which becomes equal to 180. Okay guys, so these are the 20 questions from solutions. Our next is going to be one shot of electrochemistry which will be coming soon. Till that time, please practice all of these and stay tuned.